Assalamu alaikum. Dear student, in today's lecture, we will discuss about diabetes. As you know, there are two different types of diabetes. The first one is diabetes mellitus and the second one is diabetes insipidus. In today's lecture, our main focus is on diabetes mellitus. First, we will discuss what is diabetes actually. Diabetes is a metabolic disease. This disease not concerned with nutritional disease, as the when we talk about the nutritional disease, it means your diet is not sufficient with proper nutrients. It may lack vitamins, minerals, and macronutrients like protein, lipids, and carbohydrates as well. But it is a metabolic disorder. It means your diet is sufficient with all the nutrients, but when it get enter into your body is not perform the normal functions. That's why there is a chance to the body get a disease. So metabolic disease, the diabetes mellitus is also a metabolic disease in which your body not produce enough insulin. इंसुलिन एक्चुअली है क्या? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर पेंक्रियाज ऑर्गन सेक्रेट करता है, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जब भी आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, तो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि अब पेंक्रियाज ऑर्गन को जाके स्टिमुलेट किया जाए और पेंक्रियाज के पास जो बीटा सेल्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाए, जिसकी वजह से जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। जो ही इंसुलिन वहां से सेक्रेट होगा, वो डिटेक्ट करेगा कि ब्लड के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल कितना है। अगर उसको नॉर्मल ग्लूकोज के लेवल से ज्यादा ग्लूकोज लगेगा तो वो इंसुलिन को सेक्रेट करके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मसल्स के अंदर या लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देता है, ठीक है। बट अगर हम किसी डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो इसका मतलब है कि उसका जो पेंक्रियाज है वो ड्यू टू सम रीजंस इंसुलिन मुकम्मल तौर पे सेक्रेट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है और इसको हम कहते हैं ये डायबिटीज mellitus है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज। द फर्स्ट वन इज टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज। Type 1 diabetes, the second name is juvenile diabetes, and it is more common in children and young adult. Type 1 diabetes is actually an autoimmune disorder. It means हमारा अपना ही immune system जो है वो हाइपर एक्टिव होके अपने नॉर्मल सेल्स को पैथोजन कंसिडर करते हुए उनको किल करना शुरू कर देता है। इस केस में क्या होता है कि जो आपके बीटा सेल्स हैं और पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम उनको खत्म करना शुरू कर देता है, जिसके रिजल्ट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। और ये जो इस तरह की डायबिटीज है वो 5% चांसेस हैं कि लोगों में ये इस तरह की डायबिटीज हो, ठीक है। ये प्रिवेंटेबल नहीं है, ठीक है। इसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर मे बी कि कोई वायरस जो है या फिर कोई डस्ट पार्टिकल है या फिर कोई पैथोजन है बॉडी के अंदर एक्टिव हो गया है जो कि जाके आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो एबनॉर्मली बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। देयर आर डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। द फर्स्ट वन इज एक्सेसिव थ्रस्ट एंड एपिटेट। बहुत ज्यादा आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है, यूरिनेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, अनयूजुअल वेट गेन, फटीग, थकावट होना शुरू हो जाती है, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लड विजन। और अगर किसी वीमेन के अंदर डायबिटीज टाइप 1 है तो उसमें वजाइनल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और माउथ, ड्राई माउथ एंड ईचिंग स्पेशली इन ग्रोन और वजाइनल एरिया। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि टाइप 1 डायबिटीज की हैं। देन टाइप 2 डायबिटीज। दुनिया में जितने भी लोगों को डायबिटीज होती है, मेजर जो इसकी टाइप है वो है टाइप 2 डायबिटीज। अबाउट 90% ऑफ द केसेस आर टाइप 2 डायबिटीज। यूजली हम इसको अडल्ट ऑनसेट या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज जो कि हम डिस्कस करना भूल गए कि जो टाइप 1 डायबिटीज है, क्योंकि वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, तो उसमें क्योंकि बॉडी इनफ इंसुलिन नहीं बनाती तो हम बाहर से उसकी बॉडी के अंदर थ्रू इंजेक्शन
उसकी पर्सन की बॉडी के अंदर इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं ताकि वो नॉर्मल वैसे ही फंक्शन परफॉर्म करे जैसे कि एक नॉर्मल इंसुलिन बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो ये जो है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो बॉडी इतना इंसुलिन बनाती है बट बॉडी उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाता है और टिश्यूज तक नहीं जाता। इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। इट कुड बी अ जेनेटिक डिसऑर्डर, या फिर उन पर्सन्स के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होती है जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, या फिर ये फैमिली टू फैमिली रन करी होती है, या फिर कुछ लोग जो कि ज़्यादा एज में चले जाते हैं, यानी कि 45 से ज़्यादा जिनकी एज होती है उनमें भी ये रिस्क फैक्टर है कि उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। या फिर हो सकता है कि वो पर्सन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है वो इकोमोलेट रहता है क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो रहा होता, या मे बी वेट गेन जो है इज ऑल्सो द रीजन ऑफ डायबिटीज mellitus. Then the third type is gestational diabetes mellitus, having diabetes during pregnancy, ठीक है। और इसमें गेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो होने के साथ साथ आपको डायबिटीज टाइप 2 होने के चांसेस भी हो सकते हैं। गिविंग बर्थ टू अ बेबी जो कि उसको भी रिस्क हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज का। 18 आउट ऑफ एवरी 100 प्रेग्नेंट फीमेल विल डेवलप gestational diabetes mellitus. There are different complications for uncontrolled diabetes. The first one is amputation, then heart disease, then blindness, stroke, kidney failure. All these are the complications that is uncontrolled diabetes. How we can monitor diabetes? The first thing is a blood sample is taken and put on test strip. Strip is put into blood glucose meter. Then a logbook is helpful in keeping track of blood glucose level. As you can see on the screen, 70 to 100 mg per deciliter is our normal glucose sugar level. And it is actually a fasting blood sugar level, and post meal blood sugar level is 70 to 140 mg per deciliter. And pre-diabetes and diabetes also have a different range of blood sugar level. And as you can see here, in a diabetic patient the blood sugar level is reached about 200 mg per deciliter, which is a quite higher than a normal person. So how it could be prevented? Diabetes is not preventable right now. So different studies conducted on diabetes, and there is a possible reason कि हम ग्लूकोज जो शुगर लेवल है उसको मॉनिटर कर सकते हैं अगर हम बाहर से इंसुलिन को इंजेक्ट करें। बट पहले डायबिटीज़ का इलाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हम इंसुलिन हार्मोन को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले हम क्या करते थे कि एक शीप को या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पेंक्रियाज को हम निकालते थे, वहाँ से हम इंसुलिन को निकालते थे, जो कि एक बहुत हेक्टिक और लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस था। बट अब हम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत फर्मेंटर के ज़रिए बहुत सारी इंसुलिन को कम वक्त में प्रोड्यूस कर सकते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स की हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर एक पर्सन का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्दी है, एक्सरसाइज कर रहा है, डाइट अच्छी है, तो इसका मतलब है कि उसको डायबिटीज़ से हम बचा सकते हैं। या फिर आइलेट यानी कि जो पेंक्रियाज के सेल्स हैं उनकी ट्रांसप्लांटेशन की जाए, जिसकी वजह से नॉर्मल पेंक्रियाज जो जैसे बीटा सेल्स को प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, वैसे ही यहाँ पे भी इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाए। टाइप 2 डायबिटीज की प्रिवेंशन क्या है? प्राइमरी मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट ऑल टाइप ऑफ डिजीज अ पर्सन शुड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अ पर्सन शुड डू एक्सरसाइज डेली, एंड उसको अच्छा खाना चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी डायबिटीज के साथ साथ बाकी डिफरेंट डिजीजेस से भी उसको बचाया जा सके। Then gestational diabetes, researchers found being physically active before and after their pregnancy reduce the risk of gestational diabetes mellitus by about 70% or more. A study showed that each 10 ग्राम इंक्रीज इन अ फाइबर डे, यानी कि अपने डाइटरी फाइबर को इंक्रीज किया जाए, जिसकी वजह से gestational diabetes mellitus को
26% कम करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कॉस्ट कितनी है? इट इज़ अ हाईली कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू यूएस डॉलर $245 मिलियन जो है वो रिक्वायर है इसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, और ये 2013 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ऐसे है। ग्लोबल प्रेवलेंस के कितने परसेंट जो है वो डायबिटीज है? अबाउट 387 मिलियन पीपल लिविंग विद डायबिटीज इन ऑल द वर्ल्ड। ग्लोबल जो इसका प्रेवलेंस रेट है वो इतना है। प्री डायबिटीज about 86 million and 86 million people, more than 1 out of 3 adult have pre-diabetes, and 9 out of 10 do not know they have pre-diabetes or not. Without weight loss and moderate physical activity, 15 to 30% of the people with pre-diabetes will develop type 2 diabetes within 5 years. So diabetes prevention program, lifestyle intervention group versus medicated group with metformin versus placebo group. And lifestyle intervention reduced diabetes by 58%, metformin reduced diabetes by 31%, and type 2 diabetes can be prevented or delayed with activity and diet. What can you do? You can prevent or delay type 2 diabetes by reducing your weight, eat healthy, be more active. How you can manage diabetes? Work with a health professional, eat healthy, stay active. And all these activities can prevent a person from diabetes and can help to manage the diabetes as well. So here is a study that was conducted on twin babies and on identical twins and fraternal twins. And this study shows that non-identical twins generally share 50% of their DNA, and it is usually said that identical twins 100% of their DNA. Despite this, we found 1400 places on the identical twins DNA where there was a difference in DNA methylation between the diabetic and non-diabetic patient. It means if the identical twins share 100% of the DNA, why there was a huge difference between the DNA of two diabetic and non-diabetic persons? It is believed that these differences may be due to their lifestyle, and this confirm the theory that type 2 diabetes is strongly linked to lifestyle. It means if two persons that have identical twins but they have different DNA sharing in diabetic and non-diabetic persons, it means it affected by lifestyle. A person having healthy lifestyle have less chances of their diabetes, and a person whose lifestyle is poor have more chances of their diabetes. So in future, how diabetes can be cured by regenerating human beta cells? And here is a research that was conducted, and this research was funded for 3 years. Both type 1 and type 2 diabetes result from a complete and partial loss of beta cell number and function. Thus, from a therapeutic standpoint, activating the regeneration of human beta cell could prevent or even reverse the onset of diabetes. Multiple approaches to beta cell replacement have been developed, including regeneration of individuals' own beta cell, induction of human beta cell, reprogramming of beta cell, and finally expansion of human beta cell from deceased donor. Regardless of the origin, there is a clear need for more beta cells for cell replacement therapies for diabetes. So the second point is bone fat transplant may aid in weight loss and diabetes management as well, and it also can help to prevent diabetes for a person. And these are the sources from where this material was taken. I hope this lecture is helpful for you. If you have any question, you can ask. Stay connected. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.